हेलो पीपल, हाउ आर यू। तो हम लोग लास्ट स्ट्रीम में देख रहे थे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के बारे में। सो दिस इज़ दिस पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देखा कि ट्रॉमा क्या होता है और फिर उसको किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये पार्ट टू है। और तो पहला हिस्सा है promoting safety. So, in the context of providing PFA, the principle of safety refers to the physical and psychological safety of both people who have experienced trauma and PFA providers. तो यहाँ पर सेफ्टी इशू को डिस्कस कर रहे हैं कि नॉट जस्ट उनके लिए जिनके ऊपर ट्रॉमा हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ उनके लिए जो इनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं. So first and foremost, environments must be physically safe enough for PFA to be provided. There may need to be physical changes to your environment to ensure it is physically safe enough to provide PFA. जाहिर सी बात है कि वो जो जब आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ वहाँ पर सेफ रहे. फिजिकल there may be need to be physical changes to your environment to ensure it is physically safe enough to provide PFA. Psychological safety refers to protecting people from situations that may cause them further distress, such as seeing terrible things, receiving bad news in an intensive or uncontrolled way, or being reminded of a trauma by things in their environment. तो जो लोग ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनके सामने उनके कोई टेरेबल एक्सपीरियंसेस, ऐसी बातें ना किया जाए ना जिससे कि उनका सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाए. So, in this module, we'll examine safety issues associated with the PFA provision and learn how to approach PFA in a systematic way by prioritizing the steps in providing support. तो पहला है the sense of safety, और दूसरा है the sense of self and community efficiency, hope, contentedness, and calming. Okay. Now, as we work through the material in this module, would like you to think about the following scenarios. The last जो scenario था वो it was about a nurse who had been really worked up, और उसके साथ साथ उसका एक इशू हुआ था, जो बाहर निकल रही थी और वहाँ पर खांसा था उसने, जिसकी वजह से एक जो आदमी वहाँ से गुजर रहा था, ही थॉट के शी इज़ गिविंग हिम द इन्फेक्शन, द कोविड इन्फेक्शन, जिससे उनकी आर्ग्यूमेंट हुई और उसने उसको पंच कर दिया था. खैर बहरहाल वो लास्ट मॉड्यूल का सिनारियो था. यहाँ पर है यू आर क्लॉडिया. तो यहाँ का एग्जाम्पल है क्लॉडिया का. अ कम्युनिटी केयर वर्कर इन एन इटालियन कम्युनिटी एसोसिएशन established 50 years ago to support a growing number of migrants arriving from Italy. तो जो कम्युनिटी केयर सर्विसेज होते हैं वहाँ पर इटालियन इमिग्रेंट्स हैं, तो क्लॉडिया वहाँ पर काम करती है. ड्यूरिंग द COVID-19 क्राइसिस यू हैव बीन मेकिंग regular telephone calls to vulnerable and isolated members of your local community. Your local area has experienced hard lockdown, and although your job is secure and you have been able to work from home, your partner has been without work. As a result, you have been experiencing financial stress. तो खैर क्लाउडिया का जॉब ये है कि पोटेंशियल जो माइग्रेंट्स हैं उनको कॉल करना, उनकी सिचुएशन के बारे में असेस करना ऑल दैट. लेकिन इसको ये तो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो उसका जॉब तो ठीक ठाक है. लेकिन यहाँ पर एक सिनारियो है कि इसका जो हस्बैंड है वो ड्यू टू द कोविड सिचुएशन ही इज़ अनेबल टू गो टू वर्क एंड मेक एनी मनी. तो यहाँ पर इनके सिचुएशन में शी इज़ गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रेस. On your roster of calls to make is Penina, who's 82 years old and lives alone with her dog. तो ये एक इनका सब्जेक्ट है, इनका क्लाइंट है जिसका नाम पेनिना है, जो कि 82 साल की है और वो खुद अकेली होती है अपने डॉग के साथ. You have been calling her weekly, and on this occasion, when you speak to her on the phone, she sounds breathless. तो वो अकेली है, लेकिन ये आपका काम है कि क्लॉडिया का काम है कि उसको हफ्ते में एक बार कॉल करना. और बट दिस टाइम जब इसने
कॉल किया पेनिना को, तो वो ब्रेथलेस साउंड कर रही थी, जिस सांस का प्रॉब्लम होता है ना, आउट ऑफ ब्रेथ, तो सांस की कमी. पेनिना हैज़ बीन वेरी केयरफुल टू लिमिट ट्रिप्स आउटसाइड ऑफ द हाउस, but did walk to the corner shop 4 days ago when she ran out of the dog food. So most of the time पेनिना घर पे ही होती है, लेकिन ये 4 दिन पहले गई थी अपने डॉग के लिए फूड खरीदने के लिए. You are aware that local COVID case numbers have been surging in Penina's area. आपको पता है कि उसके एरिया में ये जो कोविड की केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं. As you continue to talk with her, the first principle of PFA safety is very much on your mind. You begin to talk with Penina about the importance of COVID testing. You explore how she's coping and you ask about her immediate practical needs. तो सेफ्टी जो है ना, ये जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसने क्या, ये समझ गई कि भाई यहाँ पर ये केसेस हैं, तो वो उससे बात करने लगी कि, और उसको समझाने लगी कि किस तरह से कोविड टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो रहा था कि लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं, मुझे मुझे कहाँ से कोविड हो सकता है, मैं तो कहीं बाहर जाता नहीं है, जाती नहीं. तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा था उनको समझाना कि भाई देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो खैर बहरहाल ये सेफ्टी मेजर्स. Keep this scenario in mind as you work through the material in this module. At the conclusion of the module, you will be asked a number of questions regarding the issue of safety and PFA provision and how it might relate to the scenario. तो खैर बहरहाल हमको ये सिनारियो को मद्देनज़र रखना है as we go through the module, और ये जो सेफ्टी इशू है उसको भी रखना है. खैर बहरहाल अब सेफ्टी को एक्सप्लेन करेंगे कि सेफ्टी एक्सप्लेन्ड. लेट्स वॉच दिस वीडियो. In this module, we'll explore the first principle of PFA, safety. Safety refers to both physical and psychological safety and includes considering your safety and the safety of others. Immediately prior to providing PFA, it's important to conduct a brief assessment of your own capacity, and it will help if you can gather as much information as possible about the situation. Consider practical aspects, such as what things you need to do your job and to support yourself, as well as your own general health and well-being at that moment. You should check to ensure you are generally feeling fit and healthy and emotionally ready. Remember, it's okay to not be okay to respond and provide PFA. At a very practical level, if you attend a scene when ill-equipped to do so, you run the risk of not coping. At best, this will mean you'll not be effectively providing support to others. At worst, you could end up drawing organisational resources to support you when they could be better utilised responding to the trauma or disaster scenario. If you're not sure, this is a great time to call on a supervisor or trusted peer to act as a sounding board and to get some advice. While safety refers to both physical and psychological safety, there are no circumstances in which you should be putting yourself or others in danger. In the first instance, it's vital to ensure physical safety. Consider if there are aspects of the environment you might need to change to safely and effectively provide support. This is your responsibility, but also the responsibility of your organisation if you're acting in a PFA provider role. Once you've determined it is safe to provide PFA, identify and prioritise who needs your assistance. PFA providers should always prioritise addressing medical and safety emergencies, but do not act outside of the limits of your competence. While providing medical first aid is not part of a PFA role as such, you should alert relevant services and remain with the person until assistance has arrived. Support for people experiencing psychological distress comes next. In the first instance, look for individuals who appear disorientated, confused, frantic or panicky, or those who are extremely withdrawn, apathetic or shut down. Also be alert for those who are extremely irritable or angry or acting impulsively. In situations where there are many individuals who may need assistance, you'll need to develop a set of priorities about who needs assistance or could most benefit from contact.
and plan for how to contact them within the time and situational constraints of the setting. You may also support physical safety by guiding them away from any ongoing threat and helping them to meet basic needs. This may include making sure they have access to water and food, shelter and clean clothes, or helping them to obtain medical attention. Psychological safety also refers to protecting people from situations that may cause them further distress. This can include seeing terrible things on the news or in person, receiving bad news in an insensitive or an uncontrolled way, or even unwanted media attention. In some settings, promoting safety will involve helping people put in place their own strategies to prevent further exposure to these stresses. बहरहाल ये वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से क्लाउडिया को केयरफुल रहना था। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये कि लोग व्हेन दे गो थ्रू द सिचुएशन, जो और अगर हेल्प प्रोवाइडर अगर है ना, तो वो उनको अपनी सेफ्टी देखना होता है कि क्योंकि वो अगर अपनी सेफ्टी नहीं देखेंगे तो किसी और को हेल्प करने के चक्कर में ये फिर अगर बीमार हो जाते हैं या इनके साथ कोई मसला हो जाता है तो फिर ये डबल मसला हो जाता है। तो इसीलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को हर वक़्त अपने आप को खुद देखना है पहले, बाद में दूसरों का नीड। अब ये वीडियो में और भी दूसरी बातें डिस्कस की गई कि भई अगर आप साइकोलॉजिकली अगर आप पहले तो आपको देखना है कि भई एरिया कितना सेफ़ है, क्या है, आपकी तबीयत कैसी है उस मोमेंट जब आपको उससे मिलना है। और दूसरी जो फिज़िकल चीज़ें हैं, आपको प्रोटेक्शन आपका लेना है प्रॉपर। अगर आप ऑब्वियसली किसी इन्फेक्टेड रेज़िडेंट से मिलने जा रहे हैं, तो फिर आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, वो फिज़िकल। और दूसरा साइकोलॉजिकल है कि आप पहले जाकर साइंस देखना है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, स्ट्रेस्ड हैं, पैनिक अटैक हो रहा है उनको, क्या है? ये चीज़ भी समझना बड़ा ज़रूरी है। मतलब ब्लाइंडली आप काम नहीं कर सकते इनके साथ। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो फिर ये वीडियो में कह रहे थे कि भाई मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना आपका आपका पार्ट ऑफ द जॉब नहीं है, लेकिन प्रॉपर अगर आप देखते हैं कि वहाँ पर पैनिकिंग मोड में है या बिल्कुल सिचुएशन में जहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, वहाँ पर उनको कॉल करना है स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ को हु कैन लुक इनटू दिस एंड एंड देन यू कैन वॉच। जब तक वो हेल्प सर्विस नहीं आता तब तक आपको आपको वॉच करना है, देखना है क्या है। और फिर और कोशिश ये करना है कि भाई बहुत सारी जो बैड न्यूज़ हैं या गलत सारी बातें हैं या कोई न्यूज़ है या मीडिया वाले अगर देखना चाहते हैं कि भाई ये केस हुआ है वो उनको अपनी न्यूज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ों से आप अगर अवॉइड कराना है अपने क्लाइंट को, वरना ये कि इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। Now, there are three key steps involved when considering the principle of safety in PFA. How you address each of them will vary according to the context you are working in. For example, the provision of PFA in the context of global pandemic or a natural disaster will likely require consideration of number of different factors when comparing to the provision of PFA in aged care settings. First and foremost, environments must be physically safe enough for PFA to be provided. There are no circumstances in which you could be putting yourself on or others in danger. So जैसे मैंने पहले बोला कि आप पहले अपनी सेफ्टी देखना है और ये कि आपकी वजह से कोई और डेंजर में ना चला जाए। No matter the context, there are three key steps involved in promoting safety as you provide PFA. As you work through each step, think about how it might be applied in your role as a PFA provider. Okay, so step one, assess your readiness to provide PFA. और जैसे पहले मैंने बताया कि अब आप कितना रेडी हैं इस चीज़ के लिए, आपने सबसे पहले ये देखना है whether you are sick or not, whether you have proper means to travel, whatever, अपने आप को पहले आपको असेस करना है। स्टेप टू, असेस द सिचुएशन। जो आप सिचुएशन में वो असेस करना है कि वो जो एरिया में आप जा रहे हैं वहाँ पर कह रहे हैं कि कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप क्या हो सकता है, क्या है, कहीं वहाँ पर कोई बारिश हो रही है, कोई तूफान तो नहीं आया, तो आपको सिचुएशन को असेस करना है। एंड देन एस्टैब्लिश सेफ्टी एंड इमीडिएट नीड्स। तो फिर ये असेस करने के बाद में फिर आपने
अपनी सेफ्टी को इस्टेब्लिश करना है कि हम किस हद तक ये चीज़ को हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर अगर इमीडिएट जो नीड्स हैं आपकी, क्या ज़रूरत है आपकी, वो देखना है आपको। Assess your readiness to provide PFA. Now, before you step into the PFA provider role, it's important to think about your own capacity to deliver PFA. There are practical considerations. Do you have the things you need to provide PFA? You should also assess your own general health and well-being. आपके पास ये हेल्प प्रोवाइड करने के लिए नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं वो हैं आपके पास या नहीं है, ये एक चीज़ हो गया। देन यू शुड ऑल्सो असेस योर ओन जनरल हेल्थ एंड वेल-बीइंग, वह आप कितने बीमार हैं या आपका सिचुएशन कैसे है, क्या है, वो भी आपको सोचना है। आर यू फीलिंग फिट? आप हेल्दी हैं? हेल्दी एंड इमोशनली कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग केयर फॉर अदर्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड ट्रॉमा। नॉट जस्ट हेल्दी बट इमोशनली भी क्या प्रिपेयर्ड हैं। हो सकता है कि आपके घर में डेथ हो गई होगी, आप इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। ये सारी चीज़ों को असेस करना है। नहीं मेरी हालत ही नहीं है करने की, तो देन it's up to you, it's your call. Remember, it's okay not to feel okay. If you are not feeling up to it, the care you provide may be compromised. हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट्स ओके नॉट टू फील ओके। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप सही फील नहीं कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है या बीमार हैं, तो इट्स ओके, यू शुड टेल दिस टू योर सुपरवाइजर। नहीं, नहीं, वो मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, स्वधर्म, ऐसे करके अगर आप कूद जाएँगे, कूदना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। If you're not feeling up to it, the care you provide may be compromised. If you are unsure, consult with a manager, a supervisor, or a trusted peer to seek advice. लेकिन अगर आप समझ मतलब आप श्योर नहीं है, तो फिर आप वो एडवाइस ले सकते हो ऐसी सूरत हाल में कि भाई ये मेरा सिचुएशन है, इसमें मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मुनासिब है। तो आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हो या नहीं तो अपने सुपरवाइज़र से पूछ सकते हो या नहीं तो कोई ऐसा भरोसेमंद आपका आपके साथ साथी आपका कोई काम जो कोलीग है उससे पूछ सकते हैं आप। Think back to the scenario we introduced at the beginning of this module, in which you're calling vulnerable and isolated members of your community. Consider each item in the checklist below as if you were assessing your readiness to provide PFA. ठीक है, तो practical preparation. The items relevant to you will vary according to the ways in which you are providing PFA. But broad areas to consider include the following. Do you have anything you need to perform your role? Example, phone charger, notebook, pens, laptop, important contacts, list of support services, other relevant information, change of clothing if traveling off-site to provide PFA। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपने देखना है कि भाई आप अगर दूर जा रहे हैं तो भाई क्या आपके पास फ़ोन चार्जेस है, हो सकता है आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़े। अगर कुछ वहाँ पर मसले मसाइल होते हैं तो और कुछ आपको नोट डाउन करना होता है while you are waiting for a medical health service provider or the police or ambulance, नोटबुक के अंदर आप हर चीज़ लिख के रजिस्टर कर लेते हैं, तो फिर हो सकता है कि आप भूल जाएँ ये चीज़ों को, और जब ये सर्विसेज आते हैं तो आप आसानी से आप ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली पेन्स और इफ़ यू नीड अ लैपटॉप या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर सच एज पुलिस, एम्बुलेंस एंड मेडिकल सर्विसेज एज आई मेंशन्ड बिफोर। फिर और लिस्ट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, चेंज ऑफ क्लोथ्स इफ ट्रैवलिंग ऑफ साइट टू प्रोवाइड पीएफए, किस तरह के कपड़े आपने पहनने हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर इन्फेक्टेड एरियाज में अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपको उस तरह के क्लोथिंग चाहिए होता है, अटायर। फिर ये चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और फिर you are where you are providing PFA off-site. Have you notified family, friends and colleagues of your movements? ये बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आप अगर कोई ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी कोई मसले मसाइल हैं, तो ये आपका कॉल होता है कि भाई आप अपने फैमिलीज़ को बता दें कि भाई ये मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, जा रही हूँ। सो watch out just in case if there is delay whatever and they can't reach you, at least they can call you, or if not at least they know where you are, so they can, अगर आपके मसले में आते हैं तो। वैसे ये अक्सर मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप जहाँ भी जाते होते हैं ना तो आपको बोलकर जाना सही है। एक जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं कि कोई सो रहा है उसको जाके थप्पड़ मार के उठा के बता रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। बट एक जनरली कोई भी सिचुएशन में स्पेशली आप देखते होंगे कि
जो जो इंडिया के अंदर जो केसेस होते हैं टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, अगर ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स जिस तरह से लड़कियों को ले जाते, तो वहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है ना कि वो अगर बाहर जाते हैं तो आप अ, बस जब आप टैक्सी में बैठते हैं तो एक कॉल करके अपने फैमिली को बता दें कि देखो मैं ये टैक्सी में हूँ, ये टैक्सी नंबर है, जस्ट सो दैट द टैक्सी ड्राइवर नोस कि चलो एटलीस्ट ये इनको पता है, कि इनकी फैमिली को पता है कि मैं अगर कुछ बुरा होता है तो दे नो कि वो कौन सी टैक्सी में बैठी थी। तो अपना प्रिकॉशन लेना वो ज़रूरी होता है। मैंने वो तो जस्ट एक जनरल एग्जांपल बताया है, ऐसे बात याद आ गई। बहरहाल, what is the likely impact of your attendance on your current commitments? Example, caring for children, pets, and other dependents. तो आपको जाना है वहाँ पर असिस्ट करने के लिए, लेकिन आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो वो बच्चे को आपको प्रॉपर किसी फैमिली के पास छोड़ना है, अपनी रिश्तेदारों के पास छोड़ना है, या आपको डे केयर फैसिलिटी में है, या अगर कोई नहीं मिलता डे केयर फैसिलिटी ऑफ द हैंड, तो ज़रूरी नहीं है मिलना। तो ऐसी सूरत हाल में आपको अपना सिचुएशन भी देखना है। आपके पास आपके पेट्स भी होते हैं, कुछ लोग पेट्स को अपने अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनका भी तो आपको देखना होता है ना। तो ख़ासतौर पे वेस्टर्न एनवायरनमेंट में एवरीथिंग कॉस्ट मनी, तो वो आपको अपना सिचुएशन असेस करना है। जाना है आपको, ठीक है, लेकिन मेरे घर में बच्चा है और कोई मुझे देखने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या करूँ? बात करो अपने मैनेजर से। डू यू हैव अदर कमिटमेंट्स यू शुड प्रायोरिटाइज अबव प्रोवाइडिंग पीएफए? तो ये ज़रूरी नहीं कि भाई बच्चे हैं, लेकिन और दूसरे कमिटमेंट्स जो हो सकते हैं आपके, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्टर की मीटिंग हो सकती है आपकी, कोई सर्जरी हो सकती है, या किसी से मिलना होगा आपको, इट डिपेंड्स। तो वो वैसे सूरत हाल में भी आपको वो, अगर हो सकता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करने आप जा रहे हैं, तो फिर आपको ये हक है कि आप कह सकते हो कि नहीं भाई मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है व्हाटसोएवर। हेल्थ एंड वेल बीइंग, are you feeling well enough to help? Example, not feeling ill or sleep deprived. अब ये चीज़ भी है कि आप किस तरह से आप मैं जैसे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्या भाई आप हेल्दी हैं, और क्या आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं। मतलब हो सकता है कि आप एक शिफ्ट पहले आपने किया हुआ हो एक रात भर, और दूसरे दिन आपका काम था कॉल करना, आपने कॉल किया एज अ रूटीन, 5 मिनट की बात है अगर तो ठीक है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि वो ब्रेथलेसनेस हो रहा है, मसले मसाइल और आपने जाना है, तो फिर आपको ये चेक करना है कि भाई नहीं, अगर मैं रात भर जग चुका हूँ और अब मैं जाने की कोशिश करूँगा, स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, तो हो सकता है उससे मसले बढ़ेंगे, हू नोस। डू यू फील इमोशनली रेडी टू प्रोवाइड पीएफए? जैसे पहले डिस्कस किया कि भाई इमोशनली भी आप, साइकोलॉजिकली भी आप ठीक हो या नहीं हो। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि हो सकता है कि आपके घर में डेथ हो, हू नोस। Okay, is this particular incident likely to evoke memories of other experiences that are upsetting you? तो आपका पहले कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था, और अभी उसके आपको बैड एक्सपीरियंस है, और आप जो नेक्स्ट कॉलर जिसके पास आप जाने वाले हैं वो भी एक्सीडेंट का केस है, तो ये भी आपको सोचना है कि आप वहाँ पर जाएँगे तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। पहले आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ था, जहाँ पर आप के साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, तो ऐसा ना हो कि फिर आप ये नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस में जा रहे हैं, हो सकता है कि इसकी वजह से आपका वो पास्ट मेमोरीज वापस आ जाएँ, जिसकी वजह से आप अपना जॉब प्रॉपर ना कर सकें। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होते हैं, और हर सिचुएशन में अलग-अलग इसके रूप होते हैं। Are you experiencing other stressors that might impact your capacity to respond to this incident? और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, वेदर खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर आप ये समझते हैं कि भाई आपकी जो कैपेसिटी है टू रिपोर्ट टू द इंसिडेंट, नो, दैट might not be the right thing to do at that time. Now, do you have strategies in place to help yourself cope with your work as a PFA provider, such as talking to a colleague afterwards? तो आपने कुछ सोचा हुआ है, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं कि किस तरह से आप कोप अप करेंगे, टू हेल्प योरसेल्फ कोप विद योर वर्क एज अ पीएफए प्रोवाइडर? तो अब ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए छोटी मोटी स्ट्रैटेजी होती हैं हर काम के लिए। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सजेस्ट टॉकिंग टू कलीग आफ्टरवर्ड्स। तो आपने जब वहाँ गया, आप वहाँ गए हैं, वो अपना काम कर दिया आपने, उसके बाद में आप अपने जो कलीग है उसको रिपोर्ट करते हैं कि भाई ये हुआ था, ये इंसिडेंट है,
हो सकता है कि वो कोई प्रोसीजर होगा, कोई जो ऑफ साइट होता है वो वहाँ से काम खत्म करने के बाद में जो ऑफिस के अंदर होते हैं ना उनको अपडेट देते हैं, जो भी है। बट ये चीज़ भी सोचने वाली है। Are you likely to have the capacity to pace yourself and take enough breaks if needed? तो वो क्या आपके पास उतना टाइम है जहाँ पर आप वो या सिचुएशन है जहाँ पर आप इनफ ब्रेक्स ले सकते हैं वहाँ पर? तो बहुत सारा होता है ना कि टॉयलेट ब्रेक, वाटर ब्रेक वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको सोचना है कि भई अगर मैं किसी जंगल में जा रही हूँ या जा रहा हूँ और वहाँ पर वुड आई बी एबल टू टेक अ ब्रेक, अ लंच ब्रेक? अगर मैं 12 घंटे के लिए जा रहा हूँ तो क्या वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको देखना होता है। बट पूरी कोशिश ये की जा रही है कि आपको जहाँ तक हो सके आप अगर रेडी हैं, इफ़ यू कैन डू इट साइकोलॉजिकली, मेंटली, हेल्थ वाइज़, ये सारी चीज़ों को आपको जायज़ा लेना है बिफोर यू जंप ऑन टू टेक द नेक्स्ट डिसीजन। Are you likely to have the capacity to pace yourself? ये हमने देख लिया। Do you have an overall self-care plan, other activities or routine that support your overall well-being? तो एक ओवरऑल प्लान होना चाहिए आपका, सारे चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए जो-जो चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, एक ओवरऑल प्लान होना चाहिए कि भई मैं यहाँ से निकलूँगा, ये करूँगा, ऐसे करूँगा, क्या प्रॉपर ब्रेक्स मिलेंगे मुझे, प्रॉपर चीज़ें हैं मेरे पास, ये सारी चीज़ों का आपको जायज़ा लेना है और ओवरऑल आपकी जो वेल-बीइंग है ना, उसके बेस्ड अपॉन व्हिच आपको डिसीज़न लेना है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट COVID safety, when providing PFA to those directly or indirectly impacted by the COVID-19, it is also important to ensure you adhere to current COVID-19 advice regarding physical distancing, mask wearing, and hand hygiene. To access information about government guidance, okay, ठीक है। तो वो अगर COVID-19 की सिचुएशन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखना है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कितना आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है दूसरे इंसानों से, या मास्क वेयर करना है, या हैंड हाइजीन, और जो हाथ को सैनिटाइजेशन का जो होता है वो आपके एक छोटी सी डिब्बी जो अपने साथ रखें, या वाइप्स। ऑल्सो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग पीएफए टू समवन हु इज displaying a possible COVID symptom, encourage them to get tested and see the general practitioner or other medical professional if needed. Stay up to date with the latest information on COVID symptoms. Obviously, अगर किसी को कोविड से सफ़र हो रहा है और या हो सकता है, तो आपने पहले इनको एडवाइस देना है कि भाई जाओ पहले टेस्ट करा लो अपना, चेक कर लो कहीं कोविड तो है नहीं है या नहीं है। ये चीज़ आपको पता चल जाता है। टेस्ट करा लिया, कोविड नहीं है, तो फिर आप रिलैक्स हो सकते हैं, आराम से उनके पास जा सकते हैं। नहीं, कोविड अगर आ गया तो फिर आपको अगर जाना है नहीं जाना वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपको जाना है तो आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकते हैं ना, एक्स्ट्रा केयरफुल हो सकते हैं। Assess the situation. To assess the situation before responding. As well as assessing your preparedness to provide PFA, it is important to assess the incident or situation you are entering or responding to, learning about the incident, those involved, and any potential safety or security concerns before you attend increases the likelihood you will provide PFA safety. तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ सेफ्टी इशू हो सकता है, कोई आप ऐसे एरिया में जा रहे होंगे जहाँ पर जंगली भेड़िए, चीता, शेर, ये सब हो सकते हैं। तो ये मतलब एक जनरल एग्जांपल है, बहुत सारी चीज़ों को आपको सेफ्टी का भी आपको देखना है। इफ रेलेवेंट इट कैन also be helpful to understand who is in charge of the response and who should be notified of the needs of the people involved. तो जो पहले अगर आप जा रहे हो क्लोरिया क्या फिनाइन के घर पे अगर आप जा रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई आप उनके कोई रिश्तेदार हो, उनको पहले से बता दें। अगर ये केस में तो ये अकेली रहती है घर पे, लेकिन हो सकता है कि कोई नेक्स्ट टू किन होगा या रिलेटिव होगा जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई ये है। तो वो भी लिस्ट जो है ना देख चेक कर लेना चाहिए। अगर आप सिस्टम में उनका इन्फॉर्मेशन है तो सारा चेक कर लें कि कौन नेक्स्ट टू किन है। अगर डेथ हो जाती है तो किसको इन्फॉर्म करना है, क्या है। आप एक बार साइट पर चले जाते हैं, ऑफिस से निकल जाते हैं, तो फिर आपको वो एक्सेस नहीं होता, फिर आपको किसी और को शायद कॉल करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें पहले चेक कर लेना ज़रूरी है। द क्वेश्चंस यू विल नीड टू आस्क will vary depending on the nature of the situations you are responding to. But typically, PFA providers will think about questions in the following areas. तो किस तरह के सवाल पूछना है वो डिपेंड होगा सिचुएशन के ऊपर, लेकिन जो टिपिकल जो सवाल होते हैं
नॉर्मल सिचुएशन में वो हैं, व्हाट डू दे नीड टू नो अबाउट द इंसिडेंट और सिचुएशन। तो आप वहाँ पर पहुँचे, वो ब्रेथलेसनेस है, हो रहा है, हो सकता है कि अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाना होता है, तो वो व्हाट डू दे नीड टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट के बारे में क्या मालूमात आपको होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। व्हाट डू दे नीड टू नो अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर सर्विसेज और एजेंसीज, भाई कितनी हद तक आप उनको बता सकते हैं कि भाई आपको दवाखाना ले आ जा रहा है, आपकी सांस रुक रही है, आपका हार्ट फेल होने वाला है, आप मरने वाले हैं, और कौन कौन आपको एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को आपको सोचना है। व्हाट डू दे नीड टू नो अबाउट सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज। तो कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज है, मैं एक जनरल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है किसी का, तो उनको आप अ, कितनी हद तक आप बता सकते हैं कि भाई आप रोड पे पड़े हुए हो, हाँ चलो सांस है, होशियार हैं, वो थोड़ा बहुत वॉक, मुश्किल से वॉक भी कर सकते हैं, तो उनको आपको बताना है कि आप को ये कितना बड़ा रिस्क है कि आप रोड के बीच में हैं, कोई और कार आके आपको मार सकती है, तो आप साइड में आ जाओ। ये भी बताना उनको कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो आपको असेस करना है। अगेन, the question you will need to ask as a PFA provider will vary depending on nature of the traumatic incident you will be responding to. So click the icons below for some examples. All right, so I'll be clicking the icons. All right, first one, the incident. What happened? When or where did the event take place? हुआ क्या, कब हुआ और कहाँ हुआ? How many people have been involved? कितने लोग involved थे? Where are they now? वो कहाँ हैं? Where there were there any injuries? क्या कोई इंजर हुआ है? क्या कोई जख्मी हुआ है? What is the nature of the individuals communities that have been affected? Example, town, school, workplace. तो कहाँ आपको चेक करना है कि भाई वो जनरल नेचर क्या है जिसके साथ हुआ हुआ, क्या वो इंडिविजुअल्स हैं या कोई कम्युनिटी है जिनके साथ ये हादसा हुआ है, क्या एक सारा का सारा टाउन है, स्कूल है या वर्क प्लेस है। ये चीज़ों से भी आपको डिपेंड होता है, हेल्प होता है ये चीज़ों से भी आपको। Is there any relevant information about the individuals, communities needing PFA? Example, other recent stressors. कोई आपके पास अगर मेडिकल हिस्ट्री है या पास्ट नोट्स हैं तो तो उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई क्या पहले कोई हिस्ट्री है इनकी, जो रिसेंट इनके साथ जो स्ट्रेस हुआ था या कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से इनके दिमाग पर ये बोलने से फ़र्क पड़ सकता है। जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो उतना अच्छा है, आप उतनी अच्छी तरह से अपनी जॉब कर सकते हैं। What resources are already in place to support trauma impacted people? तो और क्या रिसोर्सेस ऑलरेडी आपके पास इन प्लेस हैं? अगर क्या वो मरीज जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसके घर पे ऑक्सीजन का सिलेंडर ऑलरेडी है, मतलब डज शी रियली नीड इट इन ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो क्या है या नहीं? तो अगर उनके पास है ऑलरेडी तो फिर आपको ले जाने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ये अच्छा है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप इंक्वायर कर सकते हैं उतना कर लें। Other supporting services or agencies, who's organizing the response? कौन ये response organize कर रहा है? Are there other agencies, staff, PFA provider involved? तो क्या कोई और एजेंसी है जो वहाँ पर ऑलरेडी इनके साथ इन्वॉल्व है? हो सकता है कि वो किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे होंगे, उसकी तरफ से कोई और सपोर्ट दी हुई है, सर्विस है, ऐसे वो ऑलरेडी उनको उनके पास इंफॉर्मेशन होगा, तो वो भी डील कर रहे होंगे। व्हाट इज़ माई रोल? तो ऐसे सिचुएशन में फिर मेरा काम क्या होगा? हु डू आई रिपोर्ट टू? तो मैं किसको रिपोर्ट करूँगा? अपने सुपरवाइज़र को करूँगा, या अगर वहाँ पर ऑलरेडी कोई इंसिडेंट हो गया और ऑलरेडी वहाँ पर कोई मेडिकल ऑफिसर है या कोई फायर अगर हो गया तो वहाँ पर फायर वार्डन है, तो ऑब्वियसली जब फायर वार्डन जहाँ पर फायर होता है तो फायर वार्डन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इन एनी गिवन केस जहाँ पर फायर वार्डन होता है तो फिर उसके इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होते हैं, तो आपको पता करना है कि भाई हु आर यू रिपोर्टिंग टू, आर दे ऑन साइट? तो जो एजेंसी की आप बात कर रहे हैं जैसे कि फायर वार्डन है, वो क्या साइट के ऊपर है, ये पता करना है आपको। धड़ से आप नहीं घुस सकते, और फायर वार्डन है तो फिर उसके इंस्ट्रक्शंस आपको, मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ। Who's providing for basic needs? Example, medical care, food, water, shelter और family tracing. तो कहाँ से इनको खाना वाना मिल रहा है, बेसिक चीज़ें हैं, मेडिकल केयर कौन दे रहा है, और वाटर शेल्टर रहने की जिम्मेदारी किसकी है,
और या कोई फैमिली है जो मेंबर है जो इनको हेल्प कर रहा है। ओके, वेयर एंड ये लगने को आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपकी डेली डेली रूटीन है तो आप ये चीज़ें आप बहुत क्विकली यू गेट यूज्ड टू इट, एंड देन you have a list of, usually you'll have, if you keep on doing it for a while, you have a list of things that you tick off, and then of not, it might hardly take 10 minutes or 20 minutes. ओके, आर मीडिया इन्वॉल्व? अब ये बात सिचुएशन में जैसे मैंने बोला कि वो इंसिडेंट है तो मीडिया पहले वहाँ भाग के चले जाती है क्योंकि उनको अपना न्यूज़ बनाना होता है। तो वो भी तो आपको पता करना है कि अगर मीडिया अगर है तो फिर आपको इम्पिडेंसी हो सकती है कि वो आपके काम में आपको दुश्वारी आ सकती है। तो ये भी आपको पता करना ज़रूरी है कि क्या मीडिया इन्वॉल्व है केस के अंदर। बी श्योर टू ऑलवेज वर्क सिस्टमैटिकली थ्रू द क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क एंड द इंफॉर्मेशन यू नीड टू गैदर रिगार्डिंग द इंसिडेंट और सिचुएशन। तो एक सिस्टमैटिक तौर पर अगर आप काम करते हैं ना, तो आ, आपने जो क्वेश्चनर्स प्रिपेयर किए हुए हैं और उस चीज़ से आपने आंसर दिया है, यू नीड टू आस्क द इंफॉर्मेशन यू नीड टू गैदर रिगार्डिंग द इंसिडेंट और सिचुएशन, हु इज इन्वॉल्व और नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन एड्रेसिंग इट एंड एनी रेलेवेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो जैसे ये पहले ये बातें रिपीट हो रही हैं लेकिन सिचुएशन के हिसाब से फिर ये लिस्टेड है, तो कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है और किसको कोई रेलेवेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्या, ये चीज़ों में ये भी आपको पता करना है। A proper situational assessment is a critical aspect of safe engagement in PFA. Okay, proper situational assessment and equips you to understand your role and plan to provide PFA safety. Wherever possible, avoid stepping into the PFA role for a given situation until you know the answers to these questions. तो जब तक आपके पास ये सारी बातों के आंसर्स नहीं है, आप यू शुडंट बी रेडी। बट वंस यू आर सेटिस्फाइड, आपके पास सारी चीज़ों के आंसर्स हैं, तो फिर आप जंप इन कर सकते हैं। Establish safety and immediate needs. So when you are entering a situation in which you will be providing PFA, there are two key things to consider. First, physical safety. There are no circumstances in which you should be putting yourself in or others in danger. It is safe to provide support। कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जहाँ पर आप अपने आप को एंडेंजर कर सकते हो। तो अगर कोई कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा है और वहाँ पर अगर कोई रॉबरी के लिए गन लेकर आता है, देयर इज़ नो रीज़न टू फाइट विद देम, जस्ट हट जाओ और अपना काम करने दो उनको। Or are there aspects of the environment that need to change to safety and effectively provide support? तो कोई environmental changes चीज़ें हैं जो आपको चेंज करना है जिसकी वजह से आपको हेल्प होती है अपनी जॉब में सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए, वो भी आपको देखना है। Immediate health and safety needs. PFA providers should always prioritize addressing medical and safety emergencies. Support for people experiencing psychological distress will come next. तो सबसे पहली बात यह है कि जो फिजिकल जो चीज़ें होती हैं, जो मेडिकल चीज़ें, जो इमरजेंसीज होती हैं, उनकी उनकी प्रायोरिटी है सबसे पहले। तो अब अगर आप जाके अगर किसी क्लाइंट से आप मिल रहे हैं जिनका जिनका एक्सीडेंट हुआ हुआ है फॉर एग्जांपल, और उनका हाथ कट गया और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, लेकिन वो साथ ही साथ दीवाने शाने काम बात भी कर रहे हैं, वो गुस्से में भी एंड ऑल दैट। तो पहले आपको ये देखना है कि उसका जो जो वुंड है जिससे उसका ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, पहले आपने वो रोकना है। उसके बाद में वो साइकोलॉजिकल वो सारा देख सकते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल चीज़ों से आदमी इमीडिएटली मर नहीं रहा, इमीडिएट थ्रेट नहीं है, लेकिन जो हेल्थ नीड्स हैं उसका उसकी अहमियत है। तो वो चीज़ को आपने देखना है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप जाके देखें हाथ कटा हुआ है एंड ऑल दैट, तो आप मेडिकल एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, पहले वो चीज़ देखो, उसकी प्रायोरिटी है। और साइकोलॉजिकल नीड्स कम नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला। Stop. There are no circumstances in which you should be putting yourself or others in danger. This include exposure to both physical and psychological harm. यस, अगेन एंड अगेन बार बार ये चीज़ के ऊपर अहमियत दी जा रही है कि आप किसी सूरत हाल में अपने आप को या दूसरों को डेंजर में नहीं डाल सकते। और इसमें शामिल है आप एक्सपोजर टू बोथ, जो फिजिकल है और जो साइकोलॉजिकल आपको नुकसान हो सकता है, वो चीज़ों को भी आपको एक्सप्लोर करना है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन कंसिडर व्हेन एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज अबाउट हु नीड्स योर हेल्प। Physical safety and needs first. Medical need. This need can
take many shapes, including injury or loss of access to medical equipment or medication. तो अब इसके अंदर के भाई पहले क्या नीड्स क्या हैं, वो उसके अंदर मेडिकल नीड्स नंबर वन पे आता है। तो उसमें है कि लॉस ऑफ इक्विपमेंट और मेडिकेशन, मतलब शायद हो सकता है कि वो बीपी के मरीज हैं और उनका बीपी शूट हो रहा है, तो क्या उनके पास प्रॉपर दवाएं हैं या नहीं है, या हो सकता है कि वो ऑक्सीजन रखते हों घर के ऊपर या जहाँ भी हैं वो, तो वो है या ख़त्म हो गया, ये चीज़ों को आपको एक्सेस करना है। डू नॉट एक्ट आउटसाइड ऑफ द लिमिट्स ऑफ योर कॉम्पिटेंस। तो जो चीज़ आप कर सकते हैं वही करो। जो चीज़ आपको नहीं आता, ये टाइम नहीं है कि आप उसके अंदर जंप इन करके वो अपन कभी खुद डॉक्टर भी बन रहे हैं और नर्स भी आप ही हो गए हो, साइकोलॉजिस्ट भी आप ही हो गए हो, फायर वार्डन भी आप ही हो गए हो। ऐसा नहीं, जो चीज़ में आप काम आप कर सकते हो बस वही काम, उससे हट के नहीं करना है। प्रोवाइडिंग मेडिकल फर्स्ट एड इज़ नॉट पार्ट ऑफ पीएफए। तो मेडिकल फर्स्ट एड जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एज अ पीएफए प्रोवाइडर आपका ये जॉब नहीं है फर्स्ट एड का। अब जैसे फर्स्ट एड के अंदर आता है कि आपको वो कहते हैं सीपीआर देते हैं, अगर कोई हार्ट किसी की दम रुक रहा है, हार्ट का अगर मसला है, वो फर्स्ट एड मेडिकल फर्स्ट एड ट्रेनिंग अलग होती है। अगर वो आप उसमें ट्रेंड हो तो फिर आप वो कर सकते हो, बट यू हैव टू बी सर्टिफाइड। You should alert relevant services and remain with the person until assistance has arrived. तो पहला काम आपने ये करना है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो सबसे पहले आपको वो जो ऑथराइज पीपल हैं, जैसे कि एम्बुलेंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एम्बुलेंस होता है या पैरामेडिक्स होते हैं, उनको आपने कॉल करना है और उसके बाद में आपको वो मरीज के साथ, ये पेशेंट पर्सन के साथ आपको टिके रहना है, क्योंकि पता नहीं कि कब उनको ज़रूरत पड़ सकती है। सो यू शुड नॉट जस्ट कॉल कर दिया एम्बुलेंस को और बाहर चले गए सिगरेट पीने, ऐसे नहीं। वो आपको वहाँ पर रहना है, वॉच करते रहना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वल्नरेबल वल्नरेबल vulnerability, sorry. After trauma, people may be unable to look after themselves or their children. Some may experience language or cultural barriers that compound the stress of the situation. Others may experience physical or psychological disabilities that make self care more difficult in disrupted circumstances. Children and young people may be unaccompanied. तो बहुत सारे सूरत हाल में ऐसे होता है कि जब किसी के साथ ट्रॉमा होता है ना, तो वो बाज़ लोग सुन्न हो जाते हैं, बाज़ लोग साँस नहीं ले पाते, अपने केयर नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि उनकी शेल हो जाती है बाज़ वक़्त उनकी बॉडी। तो ये चीज़ भी आपको देखना है। और आगे देखते हैं फिजिकल नीड्स। पीपल में नीड फूड, वाटर एंड क्लोथिंग। As a PFA provider, you can work to ensure those needs are met and the appropriate services are provided. कुछ सूरत हाल में लोग जो है ना वो भूखे हो सकते हैं। अब जो लोग को डायबिटीज़ का होता है उनको, उसकी वजह से अगर वो अनकॉन्शियस होते हैं, ब्लैकआउट उनको होता है, तो आपको वो शुगर देना होता है ना उनको, क्योंकि बिल्कुल वीक हो जाते हैं, लैक ऑफ शुगर हो जाता है। तो ये चीज़ें देखनी कि फूड है, क्या पानी पिया हुआ इन्होंने, और प्रॉपर क्लोथिंग है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। पर हो सकता है कि बर्फ़ से ठंड से मर रहे हैं, तो कोई ब्लैंकेट ये प्रोवाइड कर दे। ओके, साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेक्स्ट। सब दूसरा, पहले तो मेडिकल की बात किया, अब दूसरा जो है ना वो मेडिकल नीड्स के ऊपर है। तो सॉरी, फिजिकल साइकोलॉजिकल के पर नेक्स्ट आते हैं। उसमें है वंस यू हैव इंश्योर्ड दैट पीपल आर फिजिकली सेफ, द नेक्स्ट प्रायोरिटी इज वर्किंग टू एनहांस द सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी फॉर डिस्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स। दिस में इन्वॉल्व, तो अब जब मेडिकल का हो गया तो नेक्स्ट इज प्रायोरिटी इज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितनी हद तक पागल हुआ है सामने वाला बंदा, या डिस्ट्रेस्ड है, या क्या दिमागी तवज्जुन किस तरह से काम कर रहा है, ये देखना है। एनीवेज, तो अब है protecting people from situations that can cause further distress by moving them to a quieter space away from ongoing threats, out of sight of a traumatic incident, or away from distressing scenes on the television. अब आप देखते हैं कि वो जो ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपको, अगर वो जैसे मैंने रोड पे एक्सीडेंट की बात की थी, रोड पे पड़े, बीच रोड में अगर हैं तो कार्स आ रहे हैं, ये तो इट कैन कंट्रीब्यूट मोर टू देयर स्ट्रेस लेवल। तो आप उनको वहाँ से हटा के कोई क्वाइट एरिया में लेकर जाएं जहाँ पर खामोशी है, और स्पेस अवे फ्रॉम ऑनगोइंग थ्रेट्स। जो ऑनगोइंग है कि अगर कहीं पर आग निकल रही है, वहाँ से धमाके हो रहे हैं, तो आपको पहले वहाँ से हटाना है उनको और एक सेफ जगह पर लेकर जाना है।
आउट ऑफ साइट ऑफ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, या जहाँ पर ट्रॉमा, वो जहाँ पर आपका इंसिडेंट हुआ है, जब तक आप वहाँ पर रहेंगे तो वो आपको वो ट्रॉमे की फीलिंग ही महसूस होती रहेगी। जब तक आप सेफ्टी की तरफ नहीं चले जाते, अगर एक बार आप चले जाते हैं तब आप वहाँ पर एटलीस्ट उनको वो जो जो सिचुएशन में हैं उससे थोड़ा सा हट सकते हैं, और अवे फ्रॉम डिस्ट्रेसिंग सीन्स ऑन द टेलीविजन। और अगर आप घर में हैं तो आप टीवी के ऊपर कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है, ऐसे वैसे सीन जिससे आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, तो फिर वहाँ से भी आपने हटना है। लुकिंग फॉर साइंस ऑफ ट्रॉमा इन इंडिविजुअल्स who appear disoriented, looking for signs of trauma in individuals who appear disoriented, confused, frantic, or panicky, extremely withdrawn, apathetic, or shut down, extremely irritable, or angry, or impulsive. तो लोगों जो है ना, लुकिंग जो लोग जिनको आप हेल्प करने जा रहे हो उनके अंदर साइंस ऑफ ट्रॉमा देखना है आपको। क्या वो बेचैन हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या वो पैनिक हो रहे हैं, या फिर एक्सट्रीमली वो विड्रॉल सिंड्रोम जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल किसी से मिलना नहीं चाह रहे, छुप छुप रहे हैं, पर्दे के पीछे जाके छुप रहे हैं, अलमारी में जाके बैठ रहे हैं, या फिर ये एपेथेटिक है, या शट डाउन, या एक्सट्रीमली, या बहुत ज़्यादा गुस्से में है, चिड़चिड़े जाहिल हो गए, और impulsive. खैर, if appropriate, you may choose to employ some of the calming strategies you will learn about in Module 4, or you might enlist support from other workers. तो आप कोशिश कर सकते हैं ना बात करने की कि कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी, इट्स गोना बी ओवर, परेशान होने की कोई बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से आप कामिंग स्ट्रैटेजीज अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ये कि आप जो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या दूसरे जो लोग, अगर आप लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है तो दूसरे अगर वो चीज़ में माहिर हैं तो उनको एडवांस कर सकते हैं आप। Simply sitting and listening to someone talk about what has happened to them. In the next module, you will learn about the use of active listening skills and other strategies to manage distress. ये बड़ा एक कमाल की चीज़ है कि आप सिर्फ बैठ के सुनते होते हो लोगों को। कभी कभार होता है ना कि वो लोग बोलने से ही उनको हेल्प हो जाती है। तो आपको बाज़ वक़्त ये बड़ा स्किल है, लिसनिंग स्किल जिसे कहते हैं ना, बस बैठ के सुनते रहो उनको, पे अटेंशन एंड लिसन टू देम व्हाटएवर दे हैव टू से। तो जब वो बोलते होते हैं, तब जाके वो खुद ब खुद उनको अपने आंसर्स मिलते होते हैं। दैट दिस इज़ हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज़। तो वो भी एक वो भी एक स्किल है। नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग। Now, using the community care scenario as context, see below for a reminder, and with your understanding of the three key steps involved when considering the principle of safety, perform the activities below. Remember, how you address each of these three steps will vary according to the context in which you are providing PFA. Okay, तो ये important वही सिनेरियो जहाँ पर क्लॉडिया काम ने लिया था। Right, water break. Again, you are Claudia, a community care worker in an Italian community association established 50 years ago to support a growing number of migrants arriving from Italy. ये हमने पहले पढ़ा है. During the COVID-19 crisis, you have been making regular telephone calls to vulnerable and isolated members of the local community. Your local area has experienced hard lockdown, and secure although your job is secure and you have been able to work from home, your partner has been without work. As a result, you have been experiencing financial stress. On your roster of calls to make is Penina, who is 82 years old and lives alone with her dog. You have been calling her weekly, and on this occasion, when you speak to her on the phone, she sounds breathless. Penina has been very careful to limit trips outside of the house, but did walk to the corner shop 4 days ago when she ran out of dog food. You are aware that local COVID case numbers have been surging in Penina's area. As you continue to work with her, the first principle of PFA, safety, is very much on your mind. You begin to talk with Penina about the importance of COVID testing. You explore how she is coping, and you ask about her immediate
practical needs. Yeah, a scenario. Okay. Assessing your readiness to PFA, assess the situation, establish safety and immediate needs. Assess your readiness to provide PFA. Drag each tile to the relevant box to confirm your understanding of this step. I'm feeling emotionally available. I'm feeling emotionally available. Nothing on my mind which might distract me. Is it practical preparation? Health well-being. I'm feeling emotionally available. Nothing on my mind which might distract me. Practical preparation, health and well-being. Well, it looks to me as if it's practical. Hmm. I'm feeling emotionally available, so that's health and practical. Okay. All right. So it's part of health and well-being. I have been maintaining my self-care routine. No, it's also health and well-being. Yep. This particular incident is unlikely to evoke strong personal memories for me. Hmm. Practical preparation. No. Oh. All right. Health and well-being. Cool. I have effective strategies in place to help me cope. No. Health and well-being. I have no other commitments that might prevent me from engaging. Health and well-being. No. That's practical preparation. I have no other commitments that might prevent me from engaging. All right. I have everything I need to attend the scene equipment, contact list, etc. Practical? Yes. I have the capacity to take enough breaks and place myself. No. Health and well being. I have notified loved ones of my plan to engage. Practical preparation. Yep. That sounds like practical preparation. Yes. I'm feeling fit and healthy. That's health and well being. All right. I'm getting better at this. I have no other commitments that I should prioritize above engaging. No other commitment that I have. I should. Yeah, that looks like practical preparation. Yes. Yes. Ooh, 4 to 10 cards. Correct. Replay. Let's do it again. I'm feeling fit and healthy. That's health and well being. Correct. I have no other commitments that I should prioritize above engaging. That looks like practical preparation. Yes. I have effective strategies in place to help me cope. I have effective strategies in place to help me cope. Yep. No. Okay. That's health and well being. I have everything I need to attend the scene, equipment, contact list, etc. Health and well being. Uh-uh. Nope. I have no other commitments that might prevent me from engaging. Water break. I have notified loved ones of my plans to engage. Practical. I'm feeling emotionally available. Nothing on my mind which might distract me. That's health and well being. This particular incident is unlikely to evoke strong personal memories for me. Health and well being. I have the capacity to take enough breaks and pace myself. Health and well being.
Cool, bananas in pajamas. Hmm. Let's do it again. I have effective strategies in place to help me cope, health and well-being. I've been maintaining myself care routine, health and well-being. I have no other commitments that might prevent me from engaging, health and well-being. Ah, that's all right. Let's move on. Okay, another situation. Assess the situation. Drag each tile to the relevant box to confirm your understanding of this step. So the last step, that's fine. I've got 9 out of 10, which was all right. I missed one. So this is about assessing the situation. So there are three tabs: the incident, other support services or agencies, safety or security concerns. So I've got, are there any ongoing safety risk to myself or others? Is there an incident? Other support services and agencies, safety or security concerns? Are there any ongoing safety risks? So obviously that looks like it's part of safety and security. Cool. Correcto. What happened? So is it the incident or the other support services or agencies or safety and security concerns? I think it's more to do with the incident. Let's try that. Yes, correcto. How many people were involved? That's again about the incident. I'm darn right. Has anyone been injured? That's again about the incident. Yes. What is my role? Other support services, safety, and this is a bit confusing. What is my role? Is it the incident, other support services or agencies, or safety or security concerns? No, it's not safety. I think it's other support service agencies. Let me try. Yes. Oh, that's good. Who else is involved? Example, police staff, other staff, other PFA provider. That's definitely other support services or agencies. Cool. Bananas in pajamas. Okay, and how will I be supported? Hmm. How will I be supported? Is that safety concern, or is it the support services or agencies, or the incident? How will I be supported? I don't think it's got to do anything to do with the incident. Other support services or agencies. All right. Safety concern. All right. मैं कंफ्यूज हूँ दो चीज़ों में. या तो ये अदर सपोर्ट सर्विसेज और एजेंसीज में आना चाहिए या सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स में आना चाहिए. Call a friend. 50-50. 50-50. No. All right. How will I be supported? Other support services or agencies. Safety में डाल के देखते हैं. चलो. Cool. Got it. Got it. Got it. All right. Acha, where are the impacted individuals now? The incident, other support services agencies, safety or security concerns. Where are the impacted individuals now? Individuals. Where are the impact? Okay. Incident. I think it's the incident. Yes. Correcto. Okay. Where and how can people access necessary support service? Where and how can people access necessary support services? Is it safety or security concern or the incident by itself? Where and how can people access necessary and how can people access necessary? I think that's other support services or agencies. Yeah, I think. Let me try. Yes. Who's organizing the response? Yeah, that's also the support service. I'm pretty sure. Yes. Who was impacted or threatened? That's more to do with the incident. Who was impacted or threatened? Yeah, that's incident.
Oh, I'm good. Okay, who do I report to? Are they on site? Who do I report to? Are they on? Yeah, that's again other support services or agencies. Yes, there you go. I'm doing pretty good so far. Are there areas to avoid entering because they are not secure or not allowed? Yes, that's got to be with the safety and security. Okay, done it. Is it an ongoing or controlled situation? Is it ongoing or controlled situation? All right, that's another difficult one. Is it ongoing or controlled situation? Other support service got nothing to do with it. The incident or the safety and security concerns. So I think it's is it an ongoing controlled situation? Ah, nope. Ah, I'm really divided whether it is part of the incident or is it part of the safety and security. Is it an ongoing or controlled situation? Okay, let me put it towards safety and security. See how it goes. Uh-uh, wrong. It's got to be the incident then. Bloody hell. एक wrong हो गया. Not really happy, but it's all right. Is the media involved? That's definitely got to do with other support services. Like I said, out of 15 cards, I was able to do the right with 14 cards. So I missed one. And you know which one. आपको पता है कौन सा मैंने मिस किया था. खैर कोई बात नहीं. All right. Establish safety and immediate needs. Drag each tile to the relevant box to confirm your understanding of this step. Establish safety and immediate needs. तो safety और बिल्कुल जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें are there quieter places away from on अच्छा तो दो जो cards हैं वो है safety concerns physical or psychological and then the other one is immediate needs. I know for a fact that immediate needs is more to do with health or safety concerns which is physical or psychological comes next. मैंने जो एग्जांपल दिया था कि वो आपको अगर हाथ कट गया ब्लड जा रहा है तो पहले आपने मेडिकल सर्विसेज देखना है बाद में दूसरी जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं. तो खैर बहरहाल ये सवाल है आर देयर क्वाइटर प्लेसेस अवे फ्रॉम ongoing threats that you can take people to. So that's safety concerns, physical or psychological. Yes, that's what it is. I am sure. Yes. Okay. Are there unmet medical needs? Hmm. That's safety concerns, physical or अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं क्योंकि फिजिकल वर्ड आ गया ना. Okay, immediate needs. All right, I think it's the immediate needs. Could be wrong. Nah, nah, nah. I was wrong. Okay, that's again physical. Safety में आता है वो. Is the environment safe to provide PFA? That's safety concerns. Pretty sure. Are there language barriers? Anyone struggling to understand what is happening? That's safety concerns. Has anyone sustained physical injuries? Yep, safety. Are the people who are having difficulties managing their initial response? That's again safety. Do people need food, water, clothing? That's again safety. No. Yeah, the people need food, water, or clothing. Yeah, that's immediate needs. Okay, fair enough. Is there anyone who is unable to independently return to Is there anyone who is unable to independently return home safely? Is there anyone who is unable to independently return home? I think that's more to do with safety. Cool. Yes, it is. Are there unaccompanied children or young people? That's again safety. Yes. Is there anyone who just needs you to sit with them? That's again safety. No. Is there anyone who just needs you to sit
with them? Is there anyone who just needs you? Okay, so that's immediate. All right, fair enough. Individuals who are having difficulties managing psychological distress. Individuals who are having difficulties managing psychological distress. Yeah, say psychological, so might as well be it. Are there aspects of the environment that need to change to provide? Yeah, that's again safety. I know it. Are there people who are looking disoriented, confused, withdrawn, or shut down? Yeah, safety. Yep. Can you take people somewhere that is out of sight of the traumatic incident? A psychological again. I know that. All right, missed three. Yeah, that's all right. Okay, now establish safety and look where we stand. One to module four. Okay. Match each item listed in order of priority for action. Though promote access to people's existing resources and their own strategies. Promote access to people's existing resources and their own strategies. Address medical and safety, establish safety and immediate needs. Address medical and safety issues. इंश्योर फिजिकल, ये सारी चीज़ें हैं जो लिस्ट है, छह चीज़ें हैं और राइट साइड के ऊपर नंबर्स हैं, फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन, थर्ड एक्शन. तो डालना है कि प्रमोट एक्सेस टू पीपल्स एग्जिस्टेंस एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इन देयर ओन स्ट्रेटजीज. एड्रेस मेडिकल एंड सेफ्टी इश्यूज. आई थिंक ये नंबर वन है. खैर, लेट मी रीड ऑन. इंश्योर physical safety of the environment in which you are providing support. ठीक है. Provide emotional practical support. Identify own readiness to respond with PFA. Own readiness to provide. Identify who is impacted and look for signs of psychological distress. Okay, so I think identify own readiness to respond. नहीं. Okay. Promote access to people's existing resources and their own. Address medical. Ensure physical safety of environment in which is providing. Ensure physical safety and environment in which you are providing support. Identify who's impacted and looking. Identify own readiness. I think ये number one है. Identify own readiness to action, readiness to respond with. पहले अपने आप को देखना है कि आप कितनी हद तक. ओके. एड्रेस मेडिकल नीड्स तो फिर बाद में आएगा जब आप जाएंगे तब. Provide emotional, promote access to people's existing resources, identify who's impacted. Okay, नहीं. दूसरा वाला, ensure physical safety of the environment in which you are providing support. I think ये second होना चाहिए. Cool. Okay, provide emotional and practical support, promote access to people's existing resources and their own strategies. Identify who's in, promote access to people's existing resources. I think ये तीसरा नंबर पे है ये. Cool. Address, okay, identify who's impacted and look for signs of psychological distress. नहीं. यहाँ पर थोड़ा सा confused. Identify who's impacted and look for signs of physical distress. Provide emotional. Address medical and safety needs. Fourth होगा. Yep. Provide, identify who's impacted and look for signs of psychological. ये fifth होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है. Provide emotional and practical support. Sixth. Submit. Hmm. Okay. Hmm.
Yeah, all good. One, two, three, four, five, six. All right, we have got it. All six of them are correct in their position. तो ठीक है, तो अभी ये कि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, और फिर दूसरे इवेंट्स हम बाद में करते हैं. I think it's been like an hour. So in this situation, we have looked into promoting safety, and then we discussed safety. We explained the safety, assessing your readiness to provide the PFA, and then assess the situation. जो आप situation में हो, establish safety and immediate needs हमने discuss किया. तो फिर बाकी का दूसरा हम फिर कभी और करते हैं. तो मैं अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, and I'll join you soon whenever I can. Thank you very much for watching. Goodbye.